Assalamu alaikum. Today we're going to start lecture number 10, and lecture number 10 is in continuation to lecture number 9, in which we were studying chapter number 5 of your books, which was basically about the global context of doing business, और कि अगर किसी कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना है या ग्लोबल बिजनेस की तरफ जाना है तो how would a company go about doing that, how will a company manage its operation abroad, and what are the positive points and what are the negative points in conducting business in different countries other than your own. Now, what I'm going to do from this point onwards is I'm just going to give you a recap of the last lecture or the previous portion of the chapter. However, this particular recap is going to be a little detailed recap as compared to the general recaps that I do. So again, chapter number 5 is what we're doing, and it's about the global context of doing business. And the first thing that we did in the last lecture was discuss globalization. We defined in great detail what globalization is, and we said that the term globalization has basically emerged from the term global village. We told you what are the characteristics of a village and why is it really called a global village. Coming back to the definition of globalization, we said that globalization is primarily whereby the economies of different countries are becoming more interdependent. What do I mean by being interdependent? I basically mean that when something happens in the economy of one country, automatically other economies, other countries also get affected by that country's economy. For example, if something today is going to happen to the Chinese economy, the adverse effects or the positive effects of that particular change or that particular action of that economy will be experienced by other countries' economy as well, be it America, be it England, be it Pakistan, be it any country in the world. So that is what globalization is. Now, once we were talking of globalization, we said that one of the very basic ways through which companies can go international, through which companies can go global, is through imports and exports. And we told you what an import is, and we explained to you what exports are. Again, imports would be when you are buying things from other countries and bringing it to your own country, and exports is going to be whereby you are selling locally produced goods and services to countries, to other countries, or to nationals abroad. Then we further went on and we discussed the concept of that why today in the year 2012, why is globalization so important? What has globalization done, or what are the factors which has resulted in increased importance of globalization? Now, the very first thing was the trade agreements that happens within countries. Where we also told you that your book will have quite a number of agreements between different countries, but with reference to Pakistan, we will only be discussing, let's say, SAARC. Now, SAARC generally has 7 countries which are in this South Asian region, and when these countries meet up and when these countries discuss, what they're doing is they're discussing various trade options within these 7 countries. Now, once these 7 countries start trading, what will happen is that automatically the flow of goods and services would become easier. Again, these trade talks or these general trade agreements would have been impossible without globalization. So if there was no globalization, we would not be thinking in terms of having trade agreements and having trade talks with other countries. The second benefit of globalization is that companies can target bigger markets. If a company is just working in Pakistan or just operating in Pakistan, all that it can target are the people living in Pakistan. But once a company starts taking its product to, let's say, India, you can imagine the huge population size of India, as a result of which that particular Pakistani company will have access to a bigger market. Now, what do I mean by access to a bigger market? I basically mean that when you have bigger access, that means
more people would mean more profits and good things for the company. Similarly, another benefit of globalization is diversification of risk, whereby you don't have all your eggs in one basket, but you put your eggs in various baskets, something that we've discussed yesterday. Again, globalization would have been impossible without technology. So if there was no internet, so if there was no email, so if there was no Skype, can you imagine how business deals would take place, or how business would be conducted? It would be literally impossible to do business without these communication technologies or without these information technologies. Then again, when you go for globalization, one of the benefits for globalization is that one country can take advantages of another country's resources. For example, why are all products made in China, or why are most of the products made in China? Simply because that China is the most populous country in the world, right? That means lots of human resource and lots of manpower. Now that again translates into inexpensive labor. Now China, people or businesses go to China for their manufacturing operations just because that China can provide them with inexpensive labor. When there's inexpensive labor, that automatically means that the cost of producing a particular product will go down. When the cost of producing a particular product will go down, that will automatically mean more profit margins for a company. So again, a country or a company would not be able to utilize another country's resources if it was not for globalization. And finally, because of globalization, countries and economies have now started thinking in terms of producing things that they can produce well and that they can produce efficiently and effectively. For all other things, they're dependent on other countries. And that's again the concept behind imports and exports. You export the things that you can produce locally and that you can produce well, while you import the things from other countries that are producing things that they can produce well. So because of globalization, now companies can just focus on their own strengths and produce the things using their own strengths, while for all other things they're dependent on another country. Then we went on to discuss that the globe in itself is divided into three major marketplaces. Now these marketplaces are basically divided by the World Bank, which is a UN agency, and the World Bank divides the globe or divides the world into three marketplaces based on the per capita income, which is basically the average income that individual people earn. Now based on the per capita income, the World Bank has basically divided the entire world into three major marketplaces: North America, Europe and Asia. And these major marketplaces are basically high income marketplaces, middle income marketplaces and low income marketplaces. Now the countries that are included in high income marketplaces are US and Canada, Europe, Kuwait, United Arab Emirates and Israel. Now all these countries have a per capita income of more than $9,386. So every country, in addition to these countries, any country which has a per capita income of more than $9,386 is basically a high income marketplace. Similarly, the middle income marketplaces, the countries which are included in the middle income marketplaces are Czech Republic, Greece, Uruguay, Mexico and Argentina. Now these are the countries whereby the per capita income is less than 9,386 but more than 765. So any country including these, or in any particular country which has per capita income of less than 9,386 but more than 765 are basically included in the middle income marketplaces. Finally, you have the low income marketplaces, whereby you would have China, whereby you would have India and whereby you would also have Pakistan, whereby the per capita income or the average income that an individual earns is less than $765. Now all these countries which has a per capita income of less than $765 are also called as developing countries. China, India and again Pakistan are an example of that. Now once we are talking of these countries, you might be thinking that how come India and China are included in this list. Now India and China are very attractive markets. Why? For one reason only: huge populations.
Now, when we talk of huge populations, companies see it as attractiveness in the market, because more people again would mean more customers again would mean more profits. So can you imagine कि जब कोई भी company India और China की बात करती है, it is all that it is looking at is number of people and number of profits. So that is why China and India become very, very attractive markets, while all other developing countries are not that attractive. Now, what's the reason for being less attractive? Basically, low literacy rate, basically weak infrastructure and unstable governments. That is why Pakistan, as of now, is also considered, yes, it's a developing country, and it's a low, the attractiveness of Pakistan or as a nation, why should other countries should invest in Pakistan? What they're thinking is, they're thinking कि जी infrastructure issue है, government के issues हैं, corruption के issues हैं, low literacy rate है, as a result of which Pakistan becomes an unattractive market for foreigners. Pakistan becomes an unattractive market for individuals and companies which are residing abroad. So basically, low-income marketplaces are, or the countries which will be included in low-income marketplaces are basically countries whereby the per capita income is $765. Now, whenever we're talking, again, the same slide, that the calculation or who bifurcates these regions, these marketplaces, or who puts countries into these marketplaces is World Bank, again, an agency of UN, which we basically, depending upon the per capita income of a country, places countries into various marketplaces. Now, what's the importance of these marketplaces? Depending upon which marketplace a country belongs to, automatically things would change. Now, countries which are part of the high income marketplaces would mean that they have the state-of-the-art technology, they're using the state-of-the-art manufacturing capabilities, the markets are huge, the markets are well-developed markets, and companies and organizations and business concerns would like to do businesses in these countries. On the other hand, when we talk of the low-income marketplaces other than India and China, for all other countries, what happens is very bad infrastructure, unstable government would mean that the policies and the procedures would change. Unstable government would mean that the companies would not rely on the governments for provision of basic necessities, and similarly there's a general dissatisfaction over how things are being conducted or how business is being conducted in these countries, as a result of which these companies become highly unattractive for investment purposes, and these countries become highly unattractive with respect to other companies coming into these low-income marketplaces countries and doing their businesses here. Then we moved on and we discussed the fact that whenever we're talking globalization, we need to understand the concept of competitive advantage. Now, the concept of competitive advantage basically goes back to the same concept that countries and economies now produce things which they can produce most efficiently, while the things that they cannot produce efficiently, they are dependent on other countries for that. Now, when we're talking of competitive advantage, we need to understand two concepts: absolute advantage and comparative advantage. Absolute advantage basically is when a country can produce something that is cheaper and or of higher quality than any other country. So absolute advantage is when you're comparing one country's resources with another country's resources, and if this one country is producing something which is of very high quality and which is at a price level which is not that high, which is at, or is producing things which is cheaper as compared to any other country, that is what absolute advantage is. For example, people might say that when Saudi Arabia produces oil, so Saudi Arabia has absolute advantage, but then you need to think that Iran and Iraq is also producing oil. So does Saudi Arabia has absolute advantage? No, Saudi Arabia cannot and will not have absolute advantage. On the other hand, when we're talking of South Africa and diamonds being produced there, South Africa would have advantage or would have absolute advantage over any other country producing diamonds. Why? Because the reserves of diamonds are present in South Africa, and South Africa has the largest number of diamond reserves, right?
Second, the diamonds that South Africa produced are way cheaper, are way inexpensive as compared to diamonds being produced in any other country. And then again, the diamonds being produced in South Africa are of much higher quality as compared to diamonds being produced in any other country in the world. So what I mean to say is that automatically South Africa would have absolute advantage over producing diamonds with respect to any other country producing the same product in the world. The second type of competitive advantage is comparative advantage, which is basically the ability to produce some products more efficiently and better than others. Meaning that whenever we're talking of a comparative advantage, we need to think that there's one country which can produce a number of things, right? It can produce A, it can produce B, and it can produce C. However, when the company does an internal analysis of its abilities, or when the economy does an internal analysis of its abilities, it finds out that it is product A that it can produce most efficiently. Now that is what is called as comparative advantage, whereby a country or an economy can produce one thing more efficiently and more effectively as compared to other things within that particular country or within that particular economy. Now again, when you're talking of comparative advantage, as I said yesterday, as I said in the last lecture as well, that yes, primarily what you do in comparative advantage is think internally, see what you can produce the best and focus on producing the best, while the rest of the things that you cannot produce that well go in the background, or you don't focus on those. Again, once you do that, you also start comparing yourself with other countries as well. You also start comparing yourself with other economies as well, and see how they are producing and see what they are producing. So I hope that now if there is any confusion in your mind between absolute advantage and comparative advantage, that has been removed. Absolute advantage is when one country can produce something cheaper and produce something which is of higher quality as compared to any other country in the world. Comparative advantage is that the country produces that single thing in which it is efficient and in which it is effective, while all the remaining things are not produced by the country but are imported from another country. So if Pakistan would have, let's say if we're talking Pakistan, if Pakistan would only focus on agricultural products, thinking that that is what we can produce most effectively and efficiently, and for the rest of our products we are dependent on another economy, or we are dependent on another country, that is what will we call as comparative advantage. Now when we were talking, or when we were discussing in the last lecture, I showed you this particular diagram as well. Now when this particular diagram was shown, let me have the whole of it in the slide first. Now when we were talking this particular slide and this particular figure, we said that absolute advantage is what South Africa has in terms of producing diamonds, whereby South Africa produces the highest number of diamonds which are cheaper and which are of very high quality as compared to the rest of the world, or as compared to any country in the world. So the number of diamonds being produced in South Africa is way more as compared to the number of diamonds being produced by the rest of the world. So it is South Africa versus rest of the world, and again there is no match between the two. Comparative advantage is basically when two countries are producing things which they can produce best. So South Korea is very good at producing DVDs, and all that it will do is, or the thing that they will focus on will be the production of DVDs, and they'll produce DVDs, they'll export DVDs, and the money that they earn from exporting DVDs, they'll buy other products which are needed in their country. Similarly, US is very good at producing grain, so it will focus on agricultural products, it will focus on doing research on agricultural products, produce grain, export it to other countries, get money for that, and then use that money to import other things which are needed within the United States of America. So that is what competitive advantage is, and when we're talking of competitive advantage, we're talking of absolute competitive advantage or comparative competitive advantage. Now, to have comparative advantage, you need to have national competitive advantage, and I've told you earlier in the last lecture as well that for any country or for any economy to achieve national competitive advantage,
they need to have 4 factors. First up, they should have factor of productions, something that you know. Second up, there should be demand of that particular product in the country. Third up, they should have very good infrastructural facilities, related and supported industries. And fourth thing that they should have is good strategies, good structures, and good rivalries. Now, once a company or once a country has all these 4, what happens is that when a country or an economy provides all these things, automatically the next step forward is getting comparative advantage. I gave you an example of Japanese cars in the last lecture, so I hope that this particular concept would be clearer to you now. So in order for a company, in order for a country to achieve a comparative advantage, first it needs to have national competitive advantage. Now again, with reference to globalization and with reference to import and export, we talked about balance of trade, we talked about trade deficit and trade surpluses, and we talked of balance of payments. I'm not going to go into details because this is something that we've done before and something that I've explained to you at length before. Then we went on to discuss exchange rates. Now exchange rates, I told you the last lecture as well, it's basically when one currency or the value in which one currency can be exchanged for that of another. So when we're exchanging Pakistani rupees for dollars, that is what an exchange rate is. So we need to give 93 Pakistani rupees to get $1. So the exchange rate between Pakistani rupees and US dollar will be 93 rupees to $1. Now your exchange rates can be fixed exchange rates or floating exchange rates. Now fixed exchange rates are those rates whereby the exchange rate would remain constant. So if it is at 93 today, it will remain at 93 in the future as well and will not change. The floating exchange rate is when the exchange rates vary on daily basis. So if it is 93.2 today, it's going to be 93.7 tomorrow, or it's going to be 92.8 day after tomorrow. So that is what a floating exchange rate is. In today's environment, in today's economies, it is the floating exchange rate which is more acceptable, which is more known as compared to the fixed exchange rates. Now, how does an exchange rate impact transaction, or what's the impact of exchange rate on transaction? A very small example is that if the exchange rate rises, what happens? Maybe if there's a, let's say, box of chocolate, and it's going to, and it's in dollars, the cost of that box of chocolate is in dollars, right? Now the box of chocolate is for $3. Now the exchange rate of Pakistani rupees to US dollars is, let's say, 60. Then that box of chocolate will cost me rupees 180. There's a typing error, so it's not 18, it is 180. Right here, right? It's not 18, it's 180. When you multiply 3 by 60, what you will get is 180. So if the box of chocolate is for $3 and the exchange rate of Pak rupees to US dollar is 60, then that means that I would have to pay 60 rupees. I would need to pay 180 rupees to get that box of chocolate. However, if the value of Pakistani rupee decreases in terms of dollar, then the same box of chocolate, which was of $3, will now cost me 270 because the exchange rate of Pak rupee to dollar has increased. Now I would need to give 90 rupees to buy a single dollar. So that's the relation of, or a very small example to explain to you what exchange rates do. When your currency or Pakistani currency devalues with respect to dollar, what happens is that people like you and me would have to pay more money if we're buying things from abroad, or if we're doing business internationally, or if we're buying raw material from countries or from other companies operating outside Pakistan. Again, whenever we're talking of currency fluctuation, it affects demand as well, as I explained to you earlier. And then again, whenever the price of dollar would come down, your exports would go up, or if the price of dollar would go up, any country's exports would come down. I explained this to you in the last lecture, so I hope that you're clear of what I'm talking about. Next is international business management, or how can a company go international? What are the ways, what are the means, what are the processes that a company can follow to go abroad? First thing that the company needs to do is determine if there is demand for its product abroad.
right? So if I am producing towels, I need to see that do people residing outside Pakistan want these towels or not. Now once that is determined and the answer to my question is yes, and I need to see, okay, how can I go international? What are the various ways of going international? Should I think about exporting my products? Should I think about opening up my company in that other country? Should I think about having an agent in that particular country? Should I go for a licensing agreement, or should I just open up a branch in that country? So I would have various different options, and I would need to explore each one of them to see which option is best suited for me. And finally, I need to ask myself that can my product be tailored or be customized for those international customers that I'm thinking of targeting. Customization of product becomes very, very important. I told you yesterday that a very small example in this case is that if you let's say eating Chinese, if you eat Chinese food in China, it's going to taste very differently as compared to if you eat Chinese food in Pakistan. Why is that? It is because that these companies, these restaurants have customized the taste of Chinese food with respect to Pakistani taste. Similarly, a lot of time you hear this remarks from people coming abroad कि जी जब पाकिस्तान में जब मैकडॉनल्ड्स खाते हैं तो उसका टेस्ट let's say US में के मैकडॉनल्ड्स से फ़र्क है. Now it is and you say नहीं ये तो नहीं हो सकता, फ्रेंचाइज है, टेस्ट तो सेम होगा. लेकिन ये हो सकता है. Why? Because McDonald's need to customize its products, need to customize its burgers with reference to the likings and dislikings of the Pakistani people. So that is what we mean, or that is what is meant when we say that you need to adapt your products, you need to adapt your services with respect to the needs and wants of the customers who are residing in the country in which you want to take your businesses to. Now this particular figure will show you how things work. Now the very first thing that you need to do is that you need to ask yourself a question, that is there international demand for the firm's product? You need to, or a company needs to understand कि जी क्या internationally मेरी product की demand है या नहीं है. Let's say कि Amrit Cola. Now if Amrit Cola is thinking of taking its product to, let's say, United States of America, the very first question that Amrit Cola will ask is there international demand for the firm's product? Amrit Cola will think, अच्छा America में और कौन सी products मौजूद हैं, and it will come, an answer will come whereby Coca-Cola is an American company or Pepsi is also available in America. So the very first question that Amrit Cola will ask, is there an international demand for Amrit Cola in the United States of America? And the answer for that is going to be no. Now if the answer to that is no, then it means, or the implication is, that you should not go international, you should remain in your own country, you should stay domestic, you should not think of going internationally. However, if the answer to that question is yes, then the second question that a company should ask itself is, can the product be modified to fit a foreign market? क्या हमारी product को हम change कर सकते हैं, customize कर सकते हैं according to the needs and wants of the customer residing in that country? Again, if the answer to the question is no, कि नहीं जी हमारी product तो बिल्कुल वैसी ही रहती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको change करें, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको different बनाएं according to the needs and wants of the people, then again you as a company should remain domestic. आपको बाहर जाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए. However, if the answer to your question is yes, कि जी हाँ हमारी प्रोडक्ट लोकल नीड्स या लोकल डिमांड, लोकल प्रेफरेंसेस के मुताबिक चेंज हो सकती है या लोकल नीड्स एंड वांट्स को मीट कर सकती है, इफ योर आंसर इज यस, देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अ थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इज द फॉरेन बिजनेस क्लाइमेट सूटेड टू इंपोर्ट्स? क्या उस कंट्री का जो क्लाइमेट है, या उस कंट्री, किसी भी कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर जाना चाहें, क्या उस पर्टिकुलर कंट्री की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इज इट वेल सूटेड फॉर योर कंपनीज बिजनेस? ना जब भी हम बिजनेस क्लाइमेट की बात करते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसमें वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोकल गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री की, हाउ
how open are they to foreign businesses? Again, if that government is open, that means कि government आपको facilitate करेगी in terms of rules, in terms of regulations, in terms of maybe providing you with a particular place, in terms of anything. Now, whenever the foreign government is facilitating a foreign company, then it becomes very easy for that company to operate internationally, or it becomes very easy for that particular company which is going international to operate in the country. Again, if the answer to this question is कि नहीं जी foreign जो government है वो तो बिल्कुल facilitate नहीं करेगी और climate जो है वो भी सही नहीं है, in that particular case what will happen is that the answer is going to be no, and then you need to take a decision that we're not going international. You need to take a decision that हम अपना business बाहर लेकर जाएंगे. For example, आजकल के दिनों में अगर कोई foreign company पाकिस्तान में business का सोच रही है, maybe the business climate factor will play a very important role, or will make a very important factor in decision making. कि जी वहाँ की foreign climate क्या है, business climate क्या है, बिजली भी नहीं है, economic issues भी हैं, political stability का भी मसला आ रहा है, stable government का भी मसला आ रहा है कि government इतनी stable नहीं है, और ये सारे negative points जो हैं that will compel a particular business or will sort of will not work in the favor of Pakistan, and the decision that particular foreign company might take is कि नहीं जी अभी इस वक्त immediately हम पाकिस्तान में अपना business लेकर नहीं जा रहे हैं, या हम सोचेंगे और हम देखेंगे और हम पाकिस्तान की environment को analyze कर रहे हैं continuous basis पर. As soon as the environment becomes stable, as soon as the business environment becomes attractive, then we will take our businesses to Pakistan. So again, if the foreign business climate is suited to imports, if the answer is no, again the business will remain domestic and will not go international. However, if the answer is yes, then the last question that the company asks itself is, does the firm have or can it get the necessary skills and knowledge to do business abroad? क्या अगर मैं अपनी कंपनी को बाहर ले जाऊं, मेरे पास इतनी एबिलिटीज़, इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स हैं कि मैं बाहर की मार्केट को केटर कर सकूं? क्या मैं बाहर की मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकूं, या मैं बाहर की मार्केट में सक्सेसफुली अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकूं? अगर कंपनी के पास स्किल्स नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है और नॉलेज नहीं है, देन अगेन द कंपनी शुड डिसाइड टू रिमेन डोमेस्टिक एंड शुड नॉट गो इंटरनेशनल. अगेन अगर कंपनी के पास स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ हैं बाहर की मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, बाहर के कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, बाहर के कंपटीशन को डील करने के लिए, देन द आंसर इज यस, एंड द डिसीजन दैट द कंपनी शुड टेक इज टू गो इंटरनेशनल. सो इस पूरे फिगर से हमको ये समझ में आता है कि इफ द आंसर टू दीज 4 क्वेश्चन इज यस, ओनली देन यू शुड गो इंटरनेशनल, और you should take your businesses abroad, or you should think of doing business globally. On the other hand, if the answer to these 4 questions or to any of these 4 questions is a no, then in that particular case you need to stay domestic and you should not think of going internationally. ना जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, आपका बिजनेस वेरियस फॉर्म्स ले सकता है. फॉर्म्स का क्या मतलब? वो आपका बिजनेस की वेरियस टाइप्स हो सकती हैं. आप ग्लोबल बिजनेस में एज एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जा सकते हैं, आप ग्लोबल बिजनेस में एज एन एजेंट जा सकते हैं, आप ग्लोबल बिजनेस में एज अ लाइसेंसिंग पार्टनर जा सकते हैं, आप ग्लोबल बिजनेस में एज अ ब्रांच ऑफिस जा सकते हैं. सो अगेन आपके पास वेरियस चॉइसेस होती हैं या वेरियस ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड. Now, the basic way or the easiest way to go international is by becoming is through imports and exports, or by becoming an exporter or an importer. Who is an exporter? An exporter is basically a company, a corporation or a manufacturer which makes products in one country and sells in another. So if we're talking surgical equipment, हम पाकिस्तान में उसको बनाती है एक कंपनी और
उसको लेट्स से यूनाइटेड किंगडम में सेल करती है, दैट कंपनी इज एन एक्सपोर्टर. इट्स मेकिंग इट्स थिंग्स इन पाकिस्तान एंड देन सेलिंग देम टू कंपनीज और कस्टमर्स in UK. On the other hand, importers are those people who buys products at foreign markets and bring them for resale at home. So those companies which are buying potatoes from India and then bringing them to Pakistan and selling them in Pakistan is what we call as an importer. Or in other words, जो बंदा एक्सपोर्ट के बिजनेस में है उसको हम एक्सपोर्टर कहते हैं, और जो बंदा इंपोर्ट के बिजनेस में है उसको हम इंपोर्ट कहते हैं. ना एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की जब हम बात करते हैं, उनकी लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है. इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में? ग्लोबल बिजनेस में. एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि जब भी आप ग्लोबल बिजनेस की बात करेंगे, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बिजनेस या आपकी कंपनी की टाइप क्या है या फॉर्म क्या है, आपकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो चेंज हो जाती है. लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में या ग्लोबल बिजनेस में वो आपकी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स की होती है. एंड देन अगेन, सिंस लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, इट बिकम्स अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे से कि जी एकदम से बाहर जाकर अपनी दुकान या अपना ब्रांच या अपनी शॉप नहीं खोलनी चाहिए. लेट्स जस्ट export our things to other countries to see the reactions of those people. अगर reaction positive होगा, अगर reaction अच्छा होगा, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम बाहर अपनी branch office खोलें या अपनी subsidies खोलें या हम कोई और option के बारे में. So importers and export, या through import and export, individuals and business concerns learn the trick of the trade, learn to go globally, learn कि जी international business कैसे करना है, दूसरी countries की needs and wants को कैसे cater for करना है, अपनी products को कैसे customize करेंगे किसी दूसरी country के में ले जाने से पहले. So since it has the lowest level of involvement, again it offers a good opportunity for companies and corporations to learn as to how to do trade globally. Now the next level of international involvement will be international firms. International firms are those firms who conduct businesses abroad and they also maintain their manufacturing facilities abroad. So जब भी हम international firms की बात करेंगे, international firms के दो characteristics होते हैं. Yes, they're conducting business abroad, वो बाहर के मुल्कों में अपनी products को sell कर रहे होते हैं, अपनी products को लेकर जा रहे होते हैं, उनको market कर रहे होते हैं. Second is कि a lot of time these international firms will have their manufacturing facilities in other countries, right? Now for example, if we're talking Chen1, which is a company based in Pakistan. Now Chen1 will be an international firm. Why? Yes, Chen1 sells its product outside Pakistan. That's the first condition. Two, Chen1 also has its manufacturing facilities in Bangladesh as well. So that is what we call an international firm, or that's the characteristics of an international firm. The third type of firm which has international involvement is a multinational company or a multinational firms, and sometimes these are also called as MNC. MNC stands for a multinational corporation. Now what are the characteristics of an MNC? An MNC designs, produces and markets products in many nations. So कोई भी multinational company जो होगी वो design भी करती है, produce भी करती है और market भी करती है अपनी company या अपनी company की products को और बहुत सारी countries में. Second thing is that the decision making is not geared towards कि जी हमने local market में क्या करना है और फिर इस market में हमने ये करना है. All the decision making is done with the international perspective in mind. All the decision making is geared for international markets. Now when we talk of Unilever, or when we talk of Nestle, or when we talk of Procter & Gamble, P&G as it is known, all of these are multinational companies. Or when we talk of Microsoft is going to be a multinational company as well. Why is it a multinational company? It's a multinational company because, again, Unilever, why is Unilever a multinational company? It's a multinational company because it designs its products for the citizens or people of Pakistan according to the needs and wants of the people of Pakistan. It produces products accordingly and it markets its product accordingly, according to the preferences of the domestic market. And then the decisions of Unilever, when we're saying कि जी Unilever के headquarter में क्या चीज़ें होनी है, क्या बातें होनी हैं, क्या decisions हो रहे हैं, Unilever का headquarter जो है उसका कोई local perspective नहीं
नहीं होगा. Since it's a huge multinational that we're talking of, the Unilever headquarter will only make decisions with reference to the international market, will only cater to the needs and wants of the international market. So whatever decisions that they're making, whatever planning that they're doing, whatever strategies that they're making, it will be with reference to what is happening in the international markets and what is happening internationally. So these are basically your three different types of international involvement. Now, as I said earlier as well कि जब आप इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो आपका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है या बिजनेस की जो टाइप होती है वो भी डिफरेंट होती है और वो भी it can vary. Now these are the various types of structures that a company can adopt when it is going international. First up is independent agents. That's the first thing that a company can do, being independent agents. Second is licensing arrangement. Third is branch offices. Fourth, strategic alliances. And fifth is foreign direct investment. Now, depending upon which structure a company or a corporation adopts, the commitment level and the risk level will vary. So when we are talking independent agents, the level of commitment and the amount of risk is the lowest when you are working as an independent agent. On the other hand, when you're investing directly in a particular country, when you're investing directly in a particular economy, the amount of commitment, and when I say commitment, what do I mean? The commitment to be successful in that country, or the commitment to do something for that country, or the commitment to make sure that whatever you're bringing to that country is good enough for the people living in that country. So whenever we're talking foreign direct investment, it is that business structure whereby the amount of risk is the highest and the amount of commitment is the highest as well. So अगर foreign direct investment खराब होती है या नहीं अच्छी होती या आप सही से नहीं करते हैं, your company or your corporation will suffer heavy losses, and there's a probability कि शायद आपकी company, आपकी corporation जो है वो उस particular उन losses से शायद निकल ही ना सके और longer term adversely affected हो. Now, in the next slide, what we're going to do is we're going to discuss each of these structures independently and see कि उनकी different characteristics क्या होती हैं. First up is an independent agent. An independent agent is basically a foreign individual or a company or a corporation that represents an exporter in foreign markets. Let's say that I have a business in Pakistan. Of again, my favorite example for this chapter is that I have a company which is producing towels, right? Now I want to take my business to Bangladesh because I feel कि जी Bangladesh is a good market for my business और वहाँ के customers अच्छे हैं and I feel कि मेरी products जो है वो वहाँ पर बहुत अच्छे से चलेगी. Now what I do is I find an agent in Bangladesh. Now that agent who will be residing in Bangladesh will basically represent my company in Bangladesh. And that agent will act as my sales representative. So मैं अपने agent के साथ interact करूँगी और agent जो है जो कि बांग्लादेश में होगा वो मेरा representative बनकर, मेरा sales representative बनकर बांग्लादेशी customers के साथ interact करेगा. वो उनके orders भी लेगा, उनसे payments भी लेगा और customers की जितनी queries है या customer satisfaction की जब हम बात करते हैं तो customers को satisfy भी करेगा. In short, that agent who is residing in Bangladesh will be representing my company or my corporation in Bangladesh. Now it's not necessary कि वो जो एजेंट है वो सिर्फ मेरी ही कंपनी को रिप्रेजेंट करे. उस एजेंट के पास शायद और भी बहुत सारी कंपनीज उसके पास ये राइट्स हों या उसके पास ये हो सकता है कि उसके पास ये राइट्स हों कि वो और बहुत सी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो. सो लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि एक एजेंट मल्टीपल कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एजेंट की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एजेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज नहीं करता है. द एजेंट विल नॉट नो कि जो मेरी टावल बनी है वो कैसे बनी है, किस मशीनरी पे बनी है, या उसको इंट्रिकेट डिटेल्स मेरी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होंगी. हाँ, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि जी कलर्स फास्ट हैं या ख़राब नहीं होगी, या जी इसकी ये खूबी है या इसकी ये एडवांटेज है, ये कंपटीशन और बहुत सारी कंपनीज टावल प्रोड्यूस करें लेकिन ये टावल इसलिए बेहतर है क्योंकि इसकी ये वजूहात हैं. बट दैट एजेंट विल नॉट बी एबल टू स्पेशलाइज or does not specialize in a particular product. So that is what an independent agent is.
The next type of structure that a business which is going international can take is licensing agreement, whereby the firm gives foreign companies right to manufacture its product. Remember हमने franchising की बात की थी, franchisee, franchisor और franchise agreement. Franchise is the best example for licensing agreement. So हम McDonald's की बात करें, या हम Pizza Hut की बात करें, या हम Hardee's की बात करें, या हम Subway की बात करें, या हम one potato, two potato की बात करें, या हम Dunkin' Donuts की बात करें, these are all operating or these are all functioning under the licensing agreements, whereby the exporter receives a fee and royalties which is basically calculated as a percentage of sales, meaning कि जो franchisor है उसको दो चीज़ें मिलती हैं, एक फीस इज़ बेसिकली फ्रेंचाइज की जो फीस की हम बात करते हैं उसको वो मिलती है, और उसको रॉयल्टीज़ मिलती है. रॉयल्टीज़ इज़ बेसिकली रॉयल्टी क्या चीज़ होती है कि जी आपकी जितनी सेल्स होंगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो आप फ्रेंचाइजर को प्रोवाइड कर देते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ रॉयल्टी. एंड अगेन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट और फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, द मोस्ट कॉमन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज अ franchise agreement is another business structure that companies can take whenever they're going international. Next is strategic alliances. Strategic alliances, joint venture. Remember, we've done joint ventures as well. When I said Sony Ericsson ka joint venture hai, Sony is another company, Ericsson is another company, and they've joined their resources to produce a particular cell phone. Now, that's an example of a strategic alliance, whereby one company finds a partner in another country in which it wants to do business. So, एक बाहर की company एक domestic company के साथ पार्टनरशिप करती है ताकि वो उस पर्टिकुलर कंट्री में आकर बिजनेस कर सके. ईच पार्टी इन्वेस्ट रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, या वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो. एंड द अलायंस इज ओन्ड बाय द पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर्स होते हैं, दोनों कंपनीज जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जाती हैं वो ओनर्स होती हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है. अगेन एज आई सेड अर्लियर कि जॉइंट वेंचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस. एंड फाइनली यू हैव योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एन FDI as we call it. FDI again जो हमने पिछली स्लाइड्स में बात की कि FDI में हाईएस्ट रिस्क होता है और हाईएस्ट कमिटमेंट होती है, which is basically buying or establishing tangible assets in another country. जहाँ पर बाहर की कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज आपकी डोमेस्टिक मार्केट्स में आती हैं, वहाँ पर tangible assets खरीदती हैं, वहाँ पर अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करती हैं, वहाँ पर आप अपनी फैक्ट्रीज खोलती हैं, लोगों को एम्प्लॉय करती हैं और आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं. उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों को सैलरीज मिलेंगी तो परचेजिंग पावर होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में आकर जब अपना बिजनेस सेट करती हैं, बी इट एनी कंपनी एक्चुअली, जब हम टोयोटा की बात करते हैं या सुजुकी की बात करते हैं, दीज आर इंटरनेशनल कंपनीज एंड दे आर प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान. वंस दे ओपन अप देयर फैक्ट्रीज हियर एंड वंस दे ओपन अप देयर प्लांट्स here to produce those cars, what they've done at that time is they've invested in Pakistan. They've opened factories, they've employed people, they're using our own factor of productions, they're using our labor, they're using their own capital, but they're using our labor, and in short they've invested in Pakistan, which is in turn helping the economy of Pakistan. Again, FDI would have the highest amount of risk and the highest amount of commitment, while when we're talking agents, they would have the lowest amount of commitment and the lowest amount of risk. Now we've talked of international trade, and we've talked of global business, and we've talked of globalization, but what we haven't talked is कि जी क्या मुश्किलात आ सकती हैं when you're taking your businesses abroad, या क्या problems हो सकती हैं, या क्या hurdles हो सकते हैं, या क्या stumbling blocks हो सकते हैं जब आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं. फर्स्ट अप एंड द ईजीएस्ट, व्हिच आई टॉक्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस. जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस को लेकर जाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल डिफरेंसेस इन दैट कंट्री एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस इन दैट कंट्री. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल लैंग्वेज.
पहला मसला जो कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं या ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, सबसे पहला मसला जो कि आप फेस करते हैं वो लैंग्वेज का होता है या लैंग्वेज बैरियर का होता है। आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आपको अपनी प्रोडक्ट ऐसे तरीके से मार्केट करनी है जो कि उनकी लैंग्वेज में समझ आए। फिर एक और मसला ये आता है कि जो कि आपकी लैंग्वेज में जो साइंस या जो चीज़ें सही हो वो शायद दूसरी लैंग्वेज में सही ना मानी जाए या समझी जाए। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि जी आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब अगर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में आता है तो वो अपने पैकेजिंग पर लिखता है कि जी हलाल प्रोडक्ट्स। शायद अगेन अगर वही मैकडॉनल्ड्स जब यूएस में सर्व करता है तो वहाँ पर पैकेजिंग में ये लफ्ज़ नहीं लिखता। ये चेंज क्यों आता है? बिकॉज इट केटर्स टू आवर कल्चरल डिफरेंसेस कि जी वी आर बीइंग मुस्लिम्स, वी आर वेरी कॉन्शियस कि जी हलाल फूड है या नहीं है, एंड सिंस इट इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड तब तो और भी ज़्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि जी प्रोडक्ट बाहर से आ रही है, क्या ये हलाल है या नहीं है। सो टू केटर टू आवर नीड्स एंड टू केटर टू आवर प्रेफरेंसेस व्हाट मैकडॉनल्ड्स डज इज इट राइट्स ऑन इट्स पैकेजिंग कि जी व्हाटएवर इज इनक्लोज्ड इज मेड ऑफ halal meat. So that is catering to the social cultural differences. और अगर companies और बिजनेसेस जो हैं वो कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस को नहीं देखेंगे या नहीं समझेंगे, देन व्हाट विल हैपन इज कि वो कभी भी दूसरी कंट्री में जाकर या दूसरी इकोनॉमी में जाकर सक्सीड नहीं कर सकते। द सेकंड बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी इकोनॉमिक डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल जब हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात की, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से फ्रांस की आप बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये फ्रांस हैज सोशलिज्म, राइट? दैट मीन्स गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट वुड इन्वॉल्व इटसेल्फ इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कि जी गवर्नमेंट आपकी हर चीज़ में इंटरफेयर करेगी, एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड इफ यू आर नॉट, देन अगेन इट कैन बिकम अ हर्डल फॉर यू, एंड इफ यू आर नॉट तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो व्हेनेवर यू गोइंग इंटरनेशनली यू नीड टू सी कि जी उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या वो प्लान्ड इकोनॉमीज हैं, क्या वो कंट्रोल्ड इकोनॉमीज हैं, क्या वो मिक्स मार्केट इकोनॉमीज हैं या मार्केट इकोनॉमीज, एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रैटेजीज को और अपनी डिसीजन मेकिंग को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लीगल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। हर कंट्री के डिफरेंट लॉज होते हैं, हर कंट्रीज की डिफरेंट रेगुलेशंस होती है, और हर कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल कैरेक्टर या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो फ़र्क होता है। ना जब भी हम लीगल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात करेंगे तो हम 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले कोटा की। व्हाट इज़ अ कोटा? अ कोटा इज बेसिकली अ रिस्ट्रिक्शन दैट, और इट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अ सर्टेन टाइप दैट कैन बी इम्पोर्टेड। कि जी आप कोटा सिस्टम क्या होता है कि जी ये प्रोडक्ट ए है, इसकी आप 500 क्वांटिटीज इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। नाउ फॉर एग्जांपल कोटा बहुत दफ़ा आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत होता है। कोई कैसा केमिकल होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे दवाइयाँ अगर बननी हो तो गवर्नमेंट कहती है कि जी जो ये रॉ मटेरियल है या जो केमिकल है आप इसको 1000 या 1 किलो से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ दैट इज़ व्हाट अ कोटा इज़ कि जी गवर्नमेंट कहती है कि इस रॉ मटेरियल जो इस केमिकल को जो कि पर्टिकुलर दवाई बनाने के लिए ज़रूरी है आप 1 किलो से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिस्ट्रिक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू योर ओन कंट्री। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कोटा। नेक्स्ट थिंग इज एन एम्बार्गो। दैट्स द अल्टीमेट कोटा, या कोटा की जो अल्टीमेट लेवल है या अल्टीमेट टाइप है वो एम्बार्गो होती है। एम्बार्गो इज फुल स्टॉप, you cannot import or export a particular product. So government completely no कर देती है, completely forbid कर देती है कि ना आप export कर सकते हैं ना आप उस particular चीज़ को import कर सकते हैं। So that's a complete full stop to anything. ना आप चीज़ को ला सकते हैं ना आप चीज़ को बाहर भेज सकते हैं। That is why it is called as an ultimate quota. Then you have tariffs. Tariffs are basically taxes that are put on imported products. Maybe an example that you can relate to is cars. आजकल बहुत ज़्यादा जापानीज कार्स पाकिस्तान में आ रही हैं। तो जब आप उन पर टैक्सेस देते हैं, जो ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, जब वो आप देते हैं उन गाड़ियों पर जब आप उनको इम्पोर्ट करते हैं, that is what we call as a tariff. Now tariff is generally of 2 types. One is the revenue tariff and the other one is a protectionist tariff. रेवेन्यू टैरिफ वो होता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है या इट रेजेस मनी फॉर द गवर्नमेंट,
ठीक हो गया। सो अगेन जब आप बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करेंगे तो आपके उस पर्टिकुलर चीज़ पे मल्टीपल टाइप के टैरिफ लगते हैं। एक टैरिफ होता है रेवेन्यू टैरिफ, जिससे गवर्नमेंट अर्न करती है या जिससे गवर्नमेंट अपने लिए पैसा रेस करती है। दूसरा टैरिफ होता है प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ बेसिकली इसलिए लगता है ताकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। अगर प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ नहीं लगता है तो फिर जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो कम होती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो वो ज़्यादा इंपोर्ट होगी, जब वो ज़्यादा इंपोर्ट होगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री सफ़र करेगी। जब आप प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगा देते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बहुत ऊपर चली जाती है। जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बहुत ऊपर चली जाएगी तो लोग उसको इंपोर्ट कम करेंगे। जब लोग उसको इंपोर्ट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा फ्लरिश करेगी, बिकॉज पीपल विल बी फोर्स टू और पीपल विल हैव नो चॉइस बट टू बाय लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सो जब मैंने आपको कहा कि जापानीज कार्स की, उस पर ये सारे टैरिफ्स लगते हैं। और अगेन कार्स को इम्पोर्ट करना, अगर आपने BMW इम्पोर्ट करनी है, जस्ट गो and see the protectionist tariff is just see the tariff जो कि आपको देना पड़ता है, ड्यूटी आपको देनी पड़ती है अगर आप बाहर से BMW या क्राइसलर को इंपोर्ट करें। और वो इसलिए इतनी ज़्यादा है बिकॉज अगर ये ना हो और इस तरीके से आपकी बाहर से गाड़ियाँ आने लगे then what will happen is कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है या जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं वो उनकी सेल्स सफ़र करेंगी। So that is what a protectionist tariff is. Now another barrier to international trade is अगेन एक सब्सिडी होती है। व्हाट इज अ सब्सिडी? सब्सिडी इज गवर्नमेंट पेमेंट टू हेल्प डोमेस्टिक बिजनेसेस to compete with foreign firms. So that is what a subsidy is. A subsidy is जहाँ पर government जो है वो local businesses को help करती है so that they can compete with foreign companies and they can compete with international firms. For example, पाकिस्तान में 21 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को। ना ये सब्सिडी हम फार्मर्स को क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जो यील्ड है या उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो और वो जो है वो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन फर्म्स के साथ या फॉरेन फार्मर्स के साथ compete कर सकें। अगर ये सब्सिडी है, जो सब्सिडी 21 बिलियन की दी जाती है फर्टिलाइजर्स के इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दी जाती है या फार्म इक्विपमेंट दी जाती है, अगर ये सब्सिडी नहीं देंगे तो क्या होगा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल गो अप वेरी हाई। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और हम उसको इंडिया की प्रोडक्ट्स की सेलिंग इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है और इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है। तो फिर कौन किसकी प्रोडक्ट खरीदेगा? ऑटोमेटिकली एवरीबडी विल बाय द इंडियन प्रोडक्ट्स एंड द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स विल नॉट बी बॉट बाय एनीबडी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी पाकिस्तानी प्रोडक्ट सफ़र करेंगी। सो सब्सिडी जो है अगेन उसमें गवर्नमेंट आपके लोकल बिजनेसेस को हेल्प आउट करती है ना। जब भी हम इस एम्बार्गोज, कोटास और सब्सिडीज़ की बात करते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आपके लोकल बिजनेसेस को फॉरेन बिजनेसेस से प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी हम प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं there are two schools of thought for this. One school says that protectionism is good because it sort of helps the local or the domestic firms and protects the domestic firms with reference to the international firms. On the other hand, there's another school of thought which feels that protectionism is not good because वो कहते हैं कि जी जब competition नहीं होगा, जब foreign firms ही कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में नहीं आएंगी तो क्या होगा कि आपकी डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो कंप्लेसेंट हो जाएंगी, वो क्वालिटी पर इतना फोकस नहीं करेंगी, वो बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करेंगी। जब फॉरेन कंपनी आ जाती है डोमेस्टिक मार्केट में तो वो कंपटीशन अच्छा देती है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी अच्छी होती हैं। सो अगेन देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सोचते हैं। कुछ पॉइंट्स प्रो प्रोटेक्शनिज्म के सही हैं एंड कुछ पॉइंट्स एंटी प्रोटेक्शनिज्म के सही हैं। देन यू हैव बिजनेस प्रैक्टिस लॉस कि जी आपकी कंट्री में ऐसे क्या लॉस हैं, ऐसी क्या रेगुलेशंस हैं जो कि फॉरेन कंपनीज को फैसिलिटेट कर सकती हैं या उनके बिजनेसेस को हिंडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस की जो कंट्री की रेगुलेशंस हैं वो फेवरेबल हैं तो आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आती है, ज़्यादा कंपनीज आपकी कंट्री में आकर बिजनेसेस करती हैं, आपकी कंट्री के लिए अच्छा होता है। बट अगर आपकी कंट्री में बहुत करप्शन है या आपकी कंट्री में बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली फॉरेन कंपनीज आर दे शाई अवे फ्रॉम कमिंग
to your country and they shy away from investing in your country. Then you have cartels and dumping. Now, cartel is basically an association of producers who control supply and prices of a particular product. Can you give me an example for a cartel? We've done this before as well. Can you think of an example? Remember we did OPEC once when we were doing chapter number 2 or 3 maybe. Again, yes, OPEC are the countries which are producing oil. Now, OPEC countries or oil producing companies have a cartel because it's basically an association of producers, or it's a collection or a group of countries which are producing oil, and that group of countries basically controls the supply of oil and controls the prices of oil. So that is what a cartel is. Second thing is dumping. Dumping is when a particular country or a company sells a product abroad for less than the cost of production. ठीक हो गया? So that is what dumping practices are, जहाँ पर एक कंपनी या एक कंट्री या एक इकोनॉमी दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्ट्स को सेल करती है, और वहाँ जो सेल करती है वो ऐसी प्राइस पर सेल करती है कि उतनी उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मीट नहीं करती. नाउ आप सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों करेगी. कंपनी या इकोनॉमी इसलिए ऐसा करती है बिकॉज जब वो डंपिंग करती है किसी और कंट्री में जाकर, देन उस कंट्री में जहाँ पर डंपिंग हो रही होती है उसकी लोकल इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है. अगर लेट्स से कि आज जापानीज, जस्ट एन एग्जांपल, आज जापानीज पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों की डंपिंग करना शुरू कर दें, दैट मीन्स दैट दे विल बी सेलिंग देयर कार्स इन पाकिस्तान एट अ प्राइस लेस देन what they are getting in Japan. So अगर जापानीज डंप करते हैं पाकिस्तान में तो इसका मतलब ये हुआ कि जापानीज गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में कम होंगी, वाइल सेम गाड़ी की प्राइस जो है जापान में ज़्यादा होगी. और सेकंड थिंग इज कि जब डंपिंग होगी तो जापानीज फर्म्स जो हैं, जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो अपनी जो कॉस्ट है उनकी उससे कम प्राइस पर पाकिस्तान में बेचेंगे. Now just assume for a minute that if that happens, what will it do to our local industry? हमारी गाड़ियों की इंडस्ट्री को क्या होगा? क्या मैं और आप जाकर लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे. हम सारी जापानीज मैन्युफैक्चर्ड कार्स खरीदेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो मेजर टाइम सफ़र करेगी. सो दैट इज़ वाई डंपिंग इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी और फॉर एनी कंट्री. नाउ दिस इज़ व्हाट योर चैप्टर नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट. अगेन अ वेरी क्विक, नाउ अ क्विक रिकैप. शुरू में मैंने बहुत डिटेल रिकैप दिया था, बहुत जल्दी वाला. वी डिड ग्लोबलाइजेशन, वी सेड वाई ग्लोबलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट टुडे. वी फर्दर वेंट ऑन टू डिस्कस कि जी ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं और क्यों करनी चाहिए है. फिर हमने बात की जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो आपके पास आपको क्या डिसीजन मेकिंग करनी होती है, विच सॉर्ट ऑफ मेक्स यू डिसाइड इफ यू वांट टू गो इंटरनेशनल और नॉट. देन वी फर्दर वेंट ऑन कि आपके वेरियस टाइप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हो, इंटरनेशनल कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो. देन वी सेड कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है. व्हेन यू गोइंग इंटरनेशनल यू कैन बी एन एजेंट जो कि लोएस्ट लेस रिस्क जिसमें होता है, या यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें हाइएस्ट रिस्क होता है. एंड देन फाइनली we discussed कि जी there are various barriers to going global, चाहे आपको लैंग्वेज के बारे में देखना पड़े, या आपको political differences के बारे में देखना पड़े, या आपको rules and regulations के बारे में देखना पड़े, या आपको economic differences के बारे में देखना चाहिए. और एक ऐसी ही कंपनी ग्लोबल बिजनेस में सक्सीड करती है जो कि इन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए फैसला करे कि उसे इंटरनेशनल जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो इन डिफरेंसेस को इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स अराउंड दीज डिफरेंसेस एंड केटर्स to these differences to be a successful company which does business abroad. So we're going to end our chapter number 5 here, which is also the end of lecture number 10. So till lecture number 11, Allah Hafiz.